Gopi Jana Balahava Girivaradari Jasuranandana Braja Janaranjana Yashuranandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Thank you. Thank you very much. It's always such a beautiful song, isn't it? Now, before we read the Bhagavatam, I was looking around beautiful paintings. Oh, who doesn't speak English? अंग्रेजी कौन कौन नहीं बोलते, किन किन को हिंदी अनुवाद की आवश्यकता है? ऊंचा ऊंचा हाथ करिए वरना फिर लगेगा. You want to do? Okay, good. Can you allow me to speak a few words for you? Yeah, I'm just going to. I was looking at the paintings, and I particularly noticed this one of Krishna, Govardhan. तो प्रजुताने में पेंटिंग्स को देख रहा था, विशेषता ये जो गोवर्धन की पेंटिंग है ऊपर कृष्णा. And it reminded me of a Prabhupada story. और मुझे इस पेंटिंग को देख के प्रभुपाद की एक कथा का स्मरण हुआ. In Chicago. शिकागो में. So the devotees took him to what they said was a park. It was like a forest. The devotees took Prabhupada to a park. तो भक्त लोग प्रभुपाद जी को एक पार्क में लेकर गए. A very dense foliage and trees. और उस पार्क में काफी घनी झाड़ियां वगैरह थीं. So they told Prabhupada, this is a park. तो उन्होंने बोला प्रभुपाद जी को ये पार्क है एक. Prabhupada said, no, it's a forest. तो प्रभुपाद ने कहा पार्क नहीं है तो वन है. Okay, so they kept on walking down this very narrow path through this lot of, you couldn't see anything through the forest practically. और उसमें इतनी घनी झाड़ियां थी कि उसमें से कुछ दिख नहीं रहा था, पतला सा रास्ता सा जिससे चल रहे थे प्रभुपाद जी. And then they saw on that path there was a deer staring right at Srila Prabhupada as the devotees were approaching, but Prabhupada was in front. So that deer was just standing there and looking right at Prabhupada. तो ऐसे निकलते निकलते आगे चल रहे थे उसी पार्क में, तो एकदम से देखा सामने एक हिरन खड़ा था और सब भक्त लोग चल रहे थे. प्रभुपाद जी सबसे आगे थे और प्रभुपाद के बिल्कुल सामने वो हिरन खड़ा था और देख रहा था प्रभुपाद की ओर. So they kept walking towards the deer, and just as they got to the deer moved off to the side. तो वो सब चल रहे थे उस हिरन की ओर और बस हिरन के बिल्कुल नजदीक पहुंच ही गए तो हिरन एकदम से साइड पर हो गया. See how that deer is looking on the left-hand side? Just kind of looking. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वो हिरन छोटा सा खड़ा है और देख रहा है. That's where the phrase in English, he's like a deer in the headlights. They just freeze when the headlights of a car are on them. तो कई बार अंग्रेजी में कहावत है कि जो गाड़ी की हेडलाइट है वो बिल्कुल स्तब्ध कर देती हैं हिरन की भांति. So one devotee said to Prabhupada, he said, Prabhupada, the deer recognized that a pure devotee was coming down the path.
तो एक भक्त ने बोला कि प्रभुपाद जी वो हिरन समझ गया कि एक भगवान के शुद्ध भक्त इस रास्ते से आ रहे हैं, And Prabhupada didn't say anything. और प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं बोला, So they kept walking for some time. और कुछ समय तक आगे चलते रहे. Another deer was standing there staring at Srila Prabhupada in the distance. और कुछ और आगे गए तो एक और हिरन खड़ा था और सामने टकाटक प्रभुपाद को देख रहा था. So as they walked to the deer, that deer did the same thing. Just kind of stepped up just as Prabhupada got there, stepped off to the side, let him go. और इस बार भी ऐसे ही हुआ कि प्रभुपाद जी और बाकी भक्त चल रहे थे और बस उस हिरन के बिल्कुल नजदीक पहुंच ही गए तो हिरन भी साइड पे हट गया. So Prabhupada turned to the devotee that had made that comment. तो प्रभुपाद ने वो जो भक्त है जिसने पहले ये कमेंट किया था उसकी ओर देखा. Perhaps you're right. और प्रभुपाद ने कहा शायद आप सच बोल रहे हैं. Do you get it? Does everybody get it? तो आप समझ आया आप सबको कि क्या ये भाव है? You know, their Prabhupada was being flattered as being a pure devotee by his disciple and didn't really acknowledge anything. तो मतलब एक तरह से एक भक्त है वो मक्खन लगा रहा था प्रभुपाद जी को कि आप शुद्ध भक्त हैं. प्रभुपाद ने कुछ ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ. But then when the other deer stepped aside, maybe you're right, you know. और फिर दूसरी बार भी ऐसे ही हो तो प्रभुपाद ने कहा हाँ हो सकता है आप सही बोल रहे हो. Such a unique soul. So that reminded me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrita. Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasan. Tato Jayamudirajat. Shinvatam Swakata Krishna. Punya Shavana Kirtanaha. Hridiyantasto Hyabadrani. Vidodati Surichatam. Nasta Prayashe Vabreshu. Nichan Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke. Bhaktir Bhavati Naishtaki. Om Gyanantarandasya Kanakana Shalakaya Shakshur Unmilitam Jena Tasmai Shri Gurev Namaha. We are reading from the 4th canto. तो हम चौथे सेकंड से पढ़ रहे हैं. Please take what you do the class. Speak, yeah, speak. हरे कृष्णा. Hare Krishna. तो हम बहुत ही विशेष स्वागत करेंगे. आज हमारे बीच में प्रभुपाद जी के शिष्य हिज ग्रेस नरसिंहानंद प्रभु जी आए हैं. और प्रभु जी का परिचय इस तरीके से है कि 1971 में यानी बहुत ही प्रारंभिक दिन थे प्रभु जी ने इस्कॉन संस्था ज्वाइन की और 1972 में शिकागो में इनकी दीक्षा हुई. तो प्रभु जी ने भी कथा ही बताई, शिकागो की कथा ही बताई थी. और प्रभुपाद जी ने उनको एक पत्र लिखा प्रभु जी को और बोला कि आप कुछ मूवीज़ बनाओ, भगवान के लिए कुछ मूवीज़ बनाओ. और फिर प्रभु जी ने इस्कॉन टेलीविज़न है उसके फाउंडर हैं. तो इस्कॉन टेलीविज़न की स्थापना की और बहुत ही अधिक काफ़ी सारी कृष्णा कॉन्शियस फिल्म्स बनाई और प्रभुपाद जी के बारे में भी काफ़ी डीवीडीज़ बनाए. आपकी शॉप पे हम देखते हैं कई बार प्रभुपाद डीवीडीज़ होते हैं. तो काफ़ी इस्कॉन टीवी के फौजी फाउंडर हैं. और इस्कॉन में एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग विंग्स हैं. तो एक सभा करके है स्पिरिचुअल एडवाइजरी भागवत असेंबली. तो प्रभु जी उसके एक्स चेयरमैन हैं जो कि ये जो समिति है जीबीसी की एडवाइजरी कमेटी है और 4 साल तक प्रभु जी उसके चेयरमैन रहे. तो बहुत ही विशेष सेवा है. और एक ग्लोबल प्रॉपर्टी ऑफिस कमेटी है प्रभु जी उसके सदस्य हैं. तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि प्रभु जी यहाँ पर आए हैं. तो आइए प्रभु जी का हार्दिक स्वागत करेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. थैंक यू प्रभु जी. वेलकम Where did टू. you get that? Who gave that to you? How did you put that together? We got some introduction प्रभु जी. Huh? कृष्णा arranged प्रभु जी. Okay.
Wow. It sounded impressive to me. सुन के मुझे अच्छा लग रहा था. Who is that guy? मैं सोच रहा था किसके बारे में बता रहे हैं. It just shows you, once again, the GBC can make a lot of mistakes. It just shows you, once again, the GBC can make mistakes. तो इससे आप एक बार फिर देख सकते हैं कि GBC कमेटी कई बार गलतियां करती है. Of course, you knew that already. Okay, should we read? Okay. Oh, this is text 47, right? Yes, we. Shri Vatsikam Ganasvayam Purusham Vanamalinam Shanka Chakra Gada Padmer Abhivyakta Chaturbhujam Shri Vatsam Ganasvayam Purusham Vanamilanam Sankha Chakra Gada Padmar Abhivyakta Chaturbhujam Shri Vatsikam Ganasvayam Purusham Vanamalinam Shankha Chakra Gada Padmar Abhivyakta Chaturbhujam Shankha Chakra Gada Padmer Chaturbhujam Shri Vatsankam Ghanashyamam Shriram Ganashayamam Sham Vanamalinam Nusham Vanamalinam Chakra Gada Padme Chakra Gada Padmer Abhivyakta Chaturbhujam Abhivyakta Chaturbhujam Shriyaksam Ganasvayam Purusham Vanamalinam Shankha Chakra Gada Padmer Abhivyakta Chaturbhujam. Matajis are nowhere in sight. Okay. This is a stag group. They call that in English, stag, all men. तो ये एक पुरुषों का छड़ों का ग्रुप है. Stag is the male elk. Elk, you know, the elk that lives in Alaska and Siberia with the big horns. तो अलास्का में साइबेरिया में एक पशु रहता है जिसके दो बड़े बड़े सींग होते हैं. पुरुष होता है वो. We have a stag group today. Shivatsatkam, Shivatsankam, the mark of Shivats on the chest of the Lord. the mark of Shivats on the chest of the Lord. Ganasvayamam, Ganashyamam, deeply bluish. deeply bluish. Purusham, Purusham, the supreme person. the supreme person. Vanamalinam, Vanmalinam, with a garland of the flowers. garland of flowers. Shankha, Shankha, conch shell. conch shell, Chakra. chakra. Aren't you supposed to say it in Hindi? Yeah. Should I? Well, the people don't know English. They don't know what wheel means. Yeah. Wheel, Chakra. wheel. Yeah, chakra. Oh, chakra. I'm sorry. Gada, club. Gada, Padmai, lotus flower. कमल पुष्प से. Abhivyakta, manifested. प्रकट. Chatubhujam, चतुर्भुजम, four-handed. चार हाथों वाले को. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. The Lord is further described as having the mark of Shivats, or the sitting place of the goddess of fortune, and his bodily hue
is deep bluish. The Lord is a person. He wears a garland of flowers, and he is eternally manifest with 4 hands which hold, beginning from the lower left hand, a conch shell, a wheel, a club, and a lotus flower. अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद इस प्रकार से है। भगवान को श्रीवत्स चिन्ह अर्थात क्षमा कीजिएगा, भगवान को श्रीवत्स चिन्ह अथवा ऐश्वर्य की देवी का आसन धारण किए हुए बताया गया है। उनके शरीर का रंग गहरा नीला श्याम है। भगवान पुरुष हैं, वे फूलों की माला पहनते हैं और वे चतुर्भुज रूप में नीचे वाले बाएं हाथ से आरंभ करते हुए शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए हुए नित्य प्रकट होते हैं। Here in this purport, here in this verse, the word Purusham is very significant. तात्पर्य, इस श्लोक में पुरुषम शब्द अत्यंत सार्थक है। The Lord is never female. ईश्वर कभी स्त्री रूप में नहीं रहते। He's always male. Purusha. वे हमेशा पुरुष रूप हैं। Don't let that go to your heads. Therefore, the impersonalist who imagines the Lord's form as that of a woman is mistaken. अतः जो निर्गुणवादी भगवान की कल्पना स्त्री रूप में करते हैं वे भ्रम में हैं। The Lord appears in female form if necessary. आवश्यकता पड़ने पर भगवान स्त्री रूप में प्रकट होते हैं। But his perpetual form is Purusha because he's originally male. किंतु उनका शाश्वत मूल रूप पुरुष का है। The feminine feature of the Lord is displayed by the goddesses of fortune. भगवान का स्त्री रूप लक्ष्मी, राधा रानी, सीता इत्यादि रूप में है। Lakshmi, Radharani, Sita, etc. All these goddesses of fortune are servitors of the Lord. ये सभी देवियां भगवान की दासियां हैं। They are not the supreme as falsely imagined by the impersonalist. वे कभी प्रधान नहीं जैसा कि निर्गुणवादी भ्रांतिवश कल्पना करते हैं। Lord Krishna, in his Narayan feature, is always four-handed. श्री कृष्ण अपने नारायण रूप में सदैव चतुर्भुज रहते हैं। On the battlefield of 𝐂𝐻𝐈𝐍, when Arjuna wanted to see his universal form, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जब अर्जुन ने उनका विराट रूप देखना चाहा, he showed this four-handed feature of Narayan. तो उन्होंने अपने चतुर्भुज नारायण रूप का दर्शन कराया। Some devotees are of the opinion that Krishna is an incarnation of Narayan. कुछ भक्त इस मत के हैं कि श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं। But the Bhagavad school says that Narayan is a manifestation of Krishna. किंतु भागवत मतावलंबियों का कथन है कि नारायण श्री कृष्ण का ही प्राकट्य हैं। Again, the translation, the Lord is further described as having the mark of Shivats, or the sitting place of the goddess of fortune. अनुवाद एक बार फिर से, भगवान को श्रीवत्स चिन्ह अथवा ऐश्वर्य की देवी का आसन धारण किए हुए बताया गया है। And his bodily hue is deep bluish. उनके शरीर का रंग गहरा नीला श्याम है। The Lord is a person. भगवान पुरुष हैं। He wears a garland of flowers. वे फूलों की माला पहनते हैं। And he's eternally manifest with four hands, और वे चतुर्भुज रूप में which hold, beginning from the lower left hand, a conch shell, wheel, club, and lotus flower. नीचे वाले बाएं हाथ से आरंभ करते हुए शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए हुए नित्य प्रकट होते हैं। I offer my humble obeisances to the lotus feet of my spiritual master, who has opened my eyes, blinded by the darkness of ignorance, with the torchlight of knowledge. तो हम दंडवत प्रणाम करते हैं आध्यात्मिक गुरु को, जिन्होंने मेरा अज्ञान रूपी अंधकार दूर किया और मुझे ज्ञान चक्षु दिए। Well, first thing that I noticed
from reading this purport, even the translation, is that there is no equivocation on the issue of the Lord is a person, a male, and manifests eternally as Narayan. तो जो मैंने पहली चीज़ इस अनुवाद और तात्पर्य को पढ़कर देखी वो ये है कि यहाँ पर इसके बारे में है कि भगवान एक पुरुष हैं और नारायण रूप में प्रकट हुए हैं. But the last sentence is the kicker. परंतु जो आखिरी वाक्य है उसमें महत्वपूर्ण चीज़ बताई गई है. Remember what that last sentence said? आपको स्मरण है क्या आखिरी वाक्य है इसमें? Close, but no bullseye. Close, but no bullseye. नज़दीक है पर पूरा सही नहीं है. This is why Srila Prabhupada is head and shoulders above any other sadhu, messiah, spiritual leader that has come for since the time of Bhaktisiddhanta at least. तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद बहुत ही अद्वितीय साधु हैं. ऐसे कोई भी साधु भक्त नहीं हुए हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बाद. Can't jump over the guru. तो गुरु के ऊपर तो गुरु के ऊपर छलांग नहीं मार सकते. He goes right, not just makes the point, but then he punches. Some devotees are of the opinion, some devotees of God, of Vishnu, obviously. प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में केवल एक पॉइंट ही नहीं बतलाते परंतु बिल्कुल सटीक कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं. जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि कुछ भक्त भगवान के बारे में ऐसा सोचते हैं. Prabhupada's not just hiding behind the truth, he's striking out. प्रभुपाद जी सच के पीछे छुप नहीं रहे हैं, वो बाहर निकल के आक्रमण कर रहे हैं. He's pointing the finger. प्रभुपाद जी उंगली दिखा रहे हैं. That Krishna is an incarnation of Narayan, but the Bhagavad school says that Narayan is a manifestation of Krishna. कि कुछ लोग बोलते हैं कि कृष्ण नारायण के अवतार हैं परंतु ऐसा नहीं है. प्रभुपाद जी कह रहे हैं भागवत तत्व के अनुसार नारायण कृष्ण के विस्तार हैं. I don't know if you noticed, but I did. तो मुझे नहीं पता कि आपने इसकी तरफ ध्यान दिया नहीं दिया पर मैंने दिया. That throughout the Bhagavad there's somewhat of a interchange between the manifestations of Narayan and Krishna is kept out of the picture. कि पूरे भागवत जब हम अध्ययन करते हैं तो हम ऐसा देखते हैं कि कई बार कृष्ण तो पिक्चर से बाहर ही हैं. बेसिकली नारायण रूप में ही भगवान प्रकट होते हैं. You don't even find the word Sri Radharani anywhere in the first 9 cantos of the Bhagavatam. और यहाँ की पहले 9 सेकंड में तो श्रीमती राधारानी का नाम भी नहीं है. All of that is reserved for those who have sincerely taken the time and the effort to practice the science of God realization. तो ये सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा तत्व है. ये छुपाकर या बचाकर रखा गया है उनके लिए जो बहुत ही गंभीर भक्त हैं, गंभीरता से भक्ति का पालन करते हैं. It's so interesting because the essence of Srila Prabhupada's message is teaching us the most intimate understanding of who is God. बहुत रोचक है ये बात क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो भी शिक्षाएं दी हैं उसका सार यही है ये बताना कि वास्तव में भगवान हैं कौन. And because we live, particularly in India, in a world where Narayan is worshipped by other sampradayas, by so many other people, we tend to dumb down. Dumb down, you know this thing? Dumb down Krishna. Don't dumb down to their level. Yes, it's all, because we have to be very respectful. तो क्योंकि भारत में विशेष रूप से लोग नारायण को ही भगवान मानते हैं, नारायण की पूजा करते हैं, तो कई बार उनको देखकर हमें भी थोड़ा नीचे झुकना पड़ता है, बहुत ही आदर सम्मान से देखना पड़ता है भगवान को.
Because we're just conditioned to be polite, have proper etiquette. It's, it's everywhere, all around us in this Bharat Varsh. We kind of just, yes, if you can worship Narayan, that's very good. If you can do some service at your temple, we tend to be nice people. तो कई बार इस नारायण भगवान की भक्ति को समझते हुए यह भाव विकसित करते हुए हमें बहुत ही आदर सम्मान से बात करनी होती है और अच्छे व्यक्तियों की तरह रहना पड़ता है समाज में घुल मिल के. We have on our altars Sitaram, Lakshman, Hanuman. हमारे मंदिर के ऑल्टर्स में सीताराम लक्ष्मण हनुमान भी हैं. Did you ever wonder why those deities are put here in Delhi and in Juhu and other places? Did you ever wonder why? क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा कि ऐसा क्यों है कि दिल्ली में, मुंबई, जुहू इत्यादि में कुछ मंदिरों में सीताराम लक्ष्मण हनुमान के विग्रह हैं, ऐसा क्यों है? Did you come up with the answers? Huh? Ahmedabad also we have. Yeah, I'm saying, did you come up with, do you know why they're there? We're worshiping Krishna. Why was the Sitaram, Lakshman, Hanuman on our altars in India? तो प्रभु जी कह रहे हैं कि हाँ ये बात तो सही है कि सीताराम लक्ष्मण हनुमान हैं, पर क्या आपने सोचा इसके बारे में कि हम तो राधा कृष्ण के उपासक हैं, तो हमारे ऑल्टर्स में सीताराम लक्ष्मण हनुमान क्यों हैं? इसके बारे में कुछ सोचा क्या आप लोगों ने? Local sentiments, yes. So, we do it in the West where there's large Indian congregations. तो हाँ ये बात सही है, जो साधारण जन समूह है उसको भगवान की तरफ आकर्षित करने के लिए पाश्चात्य जगत में भी ऐसे ही करते हैं क्योंकि वहाँ पे काफी भारतीय हैं. Bhagavatam doesn't mention Sri Chaitanya Mahaprabhu. भागवतम में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन तो नहीं है. Maybe in some purports, but not in the verses. श्लोकों में तो नहीं है, हालांकि तात्पर्य में हो सकता है. So, what have we actually been given? We have to think. We've got this Bhagavatam. What is it that we got that was more than the Srimad Bhagavatam? तो हम सबको ये भागवतम मिला है, तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि हमें क्या ऐसा मिला है जो भागवतम में ही भागवतम से भी अधिक हमारे पास आ गया है. That Prabhupada translated, wrote purports to, and published long before he went back to doing the Bhagavatam. Went back to? Long before he would continue doing the Bhagavatam. I missed it. He made long. Okay, Prabhupada stopped translating the Bhagavatam. I forget which canto he was on, 4th, 5th, I can't remember. And then he just did the entire Chaitanya Charitamrita. तो प्रभुपाद जी ने भागवतम का अनुवाद करते हुए बीच में उसको रोक दिया और फिर चैतन्य चरितामृत का विस्तार से किया अनुवाद. His mission wasn't just to deliver the Srimad Bhagavatam to us. तो प्रभुपाद जी का जो लक्ष्य है वो केवल श्रीमद् भागवतम हमें देना नहीं था. It was to give us the postgraduate knowledge of the actual personality of Godhead. Who is that Adi Purush? Who's that original person? तो प्रभुपाद जी का लक्ष्य हमें पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा देना था. ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वास्तव में कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो पुरुष. And therefore he gave us the Chaitanya Charitamrita, which is all the teachings that give us the most elevated knowledge of any religion or spiritual path anywhere on the planet. तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें चैतन्य चरितामृत दिया जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का विवरण है, और इतना विस्तार से विवरण भगवान का किसी भी धार्मिक ग्रंथ में, किसी भी आध्यात्मिक पुस्तक में पूरे विश्व में नहीं है जितना कि चैतन्य चरितामृत में है. Adi Leela, 2nd chapter. आदि लीला का 2रा अध्याय. I offer my obeisances to Sri Chaitanya Mahaprabhu. प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को अपना प्रणाम करता हूँ. By whose mercy even an ignorant child उनकी कृपा से एक नासमझ बच्चा भी can swim across the ocean of conclusive truth. वो ये जो
समुद्र है जिसमें परम सत्य का ज्ञान है उसको भी तैर सकता है, which is full of the crocodiles of various theories. और इस समुद्र में, ज्ञान रूपी समुद्र में मगरमच्छ हैं, अलग अलग आकार के, अलग अलग साइज के मगरमच्छ हैं वहाँ पर। 2.5. What the Upanishads describe as the impersonal Brahman जो उपनिषद निराकार ब्रह्मन के बारे में बताते हैं is but the effulgence of his body. वो तो भगवान का ज्योति मात्र है, भगवान से देह से निकलने वाली ज्योति मात्र है। And the Lord known as the super soul is but his plenary portion. और जो भगवान का परमात्मा के रूप में विस्तार, भगवान जो परमात्मा के रूप में हैं वो केवल एक विस्तार मात्र हैं। This second chapter of the Adi Leela is completely dedicated to understanding that Krishna is the original personality of Godhead. Even it's stated here. Now, let's translate that. तो ये जो दूसरा अध्याय आदि लीला का ये पूर्ण रूप से समर्पित है केवल इसी बात को प्रकाशित करने के लिए, स्थापित करने के लिए कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। Even he's the original, not before Radharani, but Radharani emanates from him. तो कृष्ण जो है वो मूल हैं और श्रीमती राधारानी कृष्ण से ही प्रकट होती हैं। In 229, Sri Krishna has two hands and holds a flute. तो दूसरे अध्याय के 29वें प्यार में प्रभुपाद जी बताया गया है कि कृष्ण के दो हाथ हैं और वो बांसुरी पकड़ते हैं। Whereas the other Narayans have four hands with a conch, a wheel, a mace, and a lotus. पर जो बाकी नारायण हैं उनके चार हाथ हैं जिसमें शंख, चक्र, पद्म और गदा पकड़ा हुआ है। That's, I mean, I can just wax on through the second chapter, but I encourage you to occasionally refresh yourself in the nectarian words that Srila Prabhupada has left us to keep us strong. तो मैं चाहे तो पूरा ये दूसरा अध्याय भी पढ़ सकता हूँ, परंतु मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि कृपया करके आप इस अध्याय को बाद में पढ़ें, अपने आप बीच बीच में पढ़ते रहें और अपने आप को एक बार फिर से ये जो बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी ने शब्दों का प्रयोग किया है उसमें डुबकी लगाएं। The most, for myself, when I read the teachings of Lord Chaitanya, मैं अपने लिए बता रहा हूँ कि जब मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं जो पुस्तक है वो पढ़ी, the conversation between Lord Chaitanya and Ramananda Roy, और उसमें जो रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का संवाद पढ़ा, was the most elevated most elevated kind of conversation I could or anyone could have imagined. तो जब मैंने ये संवाद पढ़ा तो मैंने ये सोचा, ये चिंतन किया कि ऐसा संवाद तो ये सबसे उत्तम दर्जे का संवाद है, ऐसा वार्तालाप कहीं पर किसी और के बीच में हो ही नहीं सकता। I said to myself, you can't get better than this. तो मैंने अपने आप को बोला कि इससे उत्तम तो कोई हो ही नहीं सकता, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। When the Lord tells him, when he's kind of resisting telling Lord Chaitanya because Lord Chaitanya already knows all this. तो रामानंद राय पहले थोड़ा सा झेप रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को कुछ बताने के लिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो सब कुछ पहले से जानते ही हैं। When the Lord tells him, no, when it comes from your lips, it's sweeter. परंतु जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नहीं, जब आपके मुखारविंद से आता है तो और अधिक मधुर हो जाता है। The Lord receives his bliss from the loving exchange of his devotees. तो भगवान स्वयं जब उनके भक्त कथा करते हैं तो वो जो प्रेममयी कथा है उसका आस्वादन करते हैं। So
this verse also has there's many interesting things here, but has a very interesting use of the word devotees. तो इस श्लोक में भी भक्त शब्द है, उसका बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किया है प्रभुपाद जी ने. Nowadays, bhakti yoga festivals are everywhere. आजकल तो भक्ति योग उत्सव हर जगह मनाए जाते हैं. Everyone, we started it, but we didn't trademark it. Started the word bhakti, but we didn't trademark it. तो हमने भक्ति शब्द का स्थापना तो की, आरंभ किया, but we didn't what? Trademark, when you go legal, तो हमने भक्ति शब्द आरंभ तो किया, पर उसका कुछ ट्रेडमार्क एस्टैब्लिश नहीं किया. And others have exploited the use of the nature of bhakti. और इसीलिए दूसरे लोगों ने इसका शोषण किया भक्ति शब्द का. Bhakti to ma, bhakti to some guru, bhakti, all kinds of bhakti festivals where they worship the different demigods. तो अलग अलग जो देवी देवताएं हैं उनके आगे भक्ति शब्द लगा दिया और ऐसे भक्ति शब्द का प्रयोग किया लोगों ने. Every Saturday night, about 300 meters from where I live, तो मैं जिस स्थान पे रहता हूँ हर शनिवार शाम को 300 मीटर दूर उस स्थान से there's a regular kirtan festival. एक हर हफ्ता एक कीर्तन होता है, कीर्तनोत्सव होता है. And they charge everybody to get in. और वहाँ पे जाने के लिए फीस भी देनी पड़ती है. So of course they came to me, say, you want to be part of our, you can chant Hare Krishna and come over, because they do a lot of chanting of Hare Krishna Maha Mantra. तो मेरे पास आए और बोला कि आप भी आइए, आप भी कीर्तन कीजिए. वो लोग हरे कृष्ण महामंत्र का भी कीर्तन भी करते हैं वहाँ पर. So I went over, I did my set. और मैं वहाँ पर गया और मैं तैयार हुआ. But then I had to sit through all these other songs, all these other bhajans to various deities. परंतु वहाँ बैठ तो गया, परंतु और अलग अलग कई तरह के भजन थे, अलग अलग देवी देवताओं को संबोधित करते हुए उस सब में बैठना पड़ा मुझे. And then another person led the Hare Krishna Maha Mantra. और फिर एक और व्यक्ति ने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया. He's a devotee, but not a Hare Krishna devotee. वो भी एक तरह से भक्त है, पर हरे कृष्ण भक्त तो नहीं है. And through my mind I kept hearing Srila Prabhupada's words, milk touched by the lips of a serpent is poison. और जब मैं उससे कीर्तन सुन रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था, मुझे प्रभुपाद के उन शब्दों का स्मरण हुआ कि जो दूध है उसको सर्प ने उसमें डंक मार दिया है. And I became more increasingly uncomfortable. और मैं अपने आप को उस परिस्थिति में अच्छा अनुभव नहीं कर रहा था. So I finally, the next week they asked me again, you want to come over? And I explained to them, you see, you think that Krishna is just one of many deities. तो अगले हफ्ते फिर मेरे पास आए मुझे बुलाने के लिए. तो मैंने उनको बोला, देखिए आप लोग ये सोचते हैं कि इतने सारे हैं, उनमें से एक कृष्ण भी हैं. And to me that's very insulting. और मेरे अनुसार ये तो बहुत ही अपमानजनक है. Because you are denigrating the person to whom I love. क्योंकि जिस व्यक्ति से मैं प्रेम करता हूं उसकी स्थिति को आप नीचा कर रहे हैं. You're denying their supreme form. तो आप जो भगवान का सर्वोच्च आकार है उसको नाकार रहे हैं. So I respect what you're doing, but I can't participate. तो मैं आदर सम्मान करता हूं जो आप कर रहे हैं उसमें, परंतु उसमें मैं भाग नहीं ले सकता. So every week for the last 2-3 years, on Saturday nights, you hear the Hare Krishna mantra kind of coming across the land. तो 2-3 साल हो गए इस बात को, और हर हफ्ते शनिवार को ये कीर्तन होता है और हरे कृष्ण महामंत्र की आवाज़ भी आती है. And I go somewhere where I don't have to hear it. और मैं उस जगह पे जाकर बैठ जाता हूँ जहाँ मुझे वो ना सुनाई दे. Because our bhakti lata bij is very tender. क्योंकि हमारी जो भक्ति लता का बीज है वो बहुत ही कोमल है. And it has to be protected. और उसकी सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है हमारे लिए. As Prabhupada described, we have to cut the weeds around this bhakti lata.
जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं जो भक्तिलता बीज है उसके आसपास जो अवांछित पौधे उग जाते हैं, झाड़ी उग जाती है, उसको काटना पड़ेगा। Prabhupada was a lion guru. प्रभुपाद जी एक सिंह गुरु थे। He can say, some devotees are of the opinion, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कुछ भक्त ऐसा मानते हैं, but I can feel his mood from that. परंतु जब प्रभुपाद जी ऐसा लिख रहे हैं तो उनका मूड क्या है मैं उसको समझ पा रहा हूँ। Who are these rascals? कौन है ये मूर्ख व्यक्ति? And we have to keep that. To keep us strong, we have to keep that mood. और हमें अपने आप को सक्षम रखने के लिए यही मूड रखना पड़ेगा। Because Maya is always trying to make us compromise. क्योंकि माया सदैव हमें प्रोत्साहित करती है कि जो मूल सिद्धांत हैं उसको हम थोड़ा उस पर कॉम्प्रोमाइज कर लें, उसको हल्का कर दें। And everyone's existence in this material world is about looking good. और इस भौतिक संसार में सबका जीवन यही है कि मैं अच्छा लग रहा हूं या नहीं लग रहा। Prabhupada was willing not to look good to people. प्रभुपाद इस बात के लिए तैयार थे कि मैं लोगों को अच्छा चाहे ना भी लगूं। He only thought about looking good to Krishna and his guru. उनको केवल यही सही था कि मैं कृष्ण को अच्छा लगूं और मेरे गुरु को अच्छा लगूं। So this is some of the things I got from the verse. तो ये कुछ चीजें मैं इस श्लोक से देख पाया। When I unpack a verse, जब मैं कोई श्लोक पढ़ता हूँ, I look for things that I don't know about. मैं उस श्लोक में या तात्पर्य में वो चीजें देखने का प्रयास करता हूँ जिनके बारे में मैं नहीं जानता। So I was looking up this Srivatsa. तो मैं श्रीवत्स के बारे में पढ़ रहा था इसमें। I realized I didn't know much about it. और मुझे लगा कि मैं इसके श्रीवत्स के बारे में अधिक जानता नहीं हूँ। And actually if you go to Wikipedia, there's whole stories about Srivatsa. अगर आप विकिपीडिया में जाएंगे तो बहुत सारी कहानियां दी हुई हैं वहाँ पर श्रीवत्स चिन्ह के बारे में। I mean, literally it means beloved of Vishnu, is what it means. उसका मूल अर्थ है कि विष्णु का प्रेमी। And on the Narayan forms, it's always on his chest. The goddess of fortune is there. और नारायण के आकार में लक्ष्मी के रूप में चिन्ह रहता है छाती पर। It's described like there's one hair on his chest, or a lock of hair. I can't remember if it's one hair or a bunch of hairs, where it's kind of curled in a very beautiful way, and that's where the goddess of fortune resides. तो ऐसा बताया गया है कि भगवान की छाती पे वो बाल है, ये क्या है या अधिक है मुझे याद नहीं है, परंतु वो बहुत अच्छे तरीके से सुलझा हुआ बाल है और वहीं पे स्थान है जहाँ पे लक्ष्मी देवी निवास करती हैं। And it's also said that when Kalki appears, he will have the Srivatsa on his chest. और ऐसा ही बताया गया है जब कल्कि अवतार आएंगे, प्रकट होंगे, तो उनकी छाती पर भी ये बाल होगा। So when you read Bhagavatam, it's always interesting to get a context. तो जब भी आप भागवतम पढ़ते हैं तो बहुत रोचक होता है कि किस संदर्भ में ये बात की जा रही है। And then always referred back to what Srila Prabhupada has stated in various places in his Vani. और उसको इससे भी जोड़ने का प्रयास करें कि श्रील प्रभुपाद ने इसके बारे में कहाँ पर क्या बताया है। So I'll leave you with a statistic that may make you think. तो मैं आपके साथ कुछ गणना शेयर करूंगा जो सुनकर आप अचंभे में आ जाएंगे। Of all the words we have from Srila Prabhupada, श्रील प्रभुपाद ने जितने भी शब्दों का प्रयोग किया है, all the words, everything he said, lectures, letters, तो जो प्रभुपाद जी के जो भी लेक्चर हैं, पत्र हैं, वार्तालाप है, सब गिन लिया, books, everything, only 22% are found in his books. तो जो भी प्रभुपाद जी ने शब्द प्रयोग किए हैं उसमें से केवल 22% शब्द उनके ग्रंथों में, किताबों में, पुस्तकों में है। Everything else is lectures, letters and conversations. तो जो 78% है वो प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में और वार्तालाप में, बातचीत में और पत्र वगैरह में है। So to understand the incomprehensible mind of a pure devotee, तो
एक शुद्ध भक्त के मन को समझना जो कि बहुत ही कठिन है समझ पाना, rather than find a Prabhupada said one line somewhere, बजाय इसके कि हम ये देखें एक पंक्ति ढूंढ लें कि प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है। Suniti was a woman and his mother, therefore सुनीति she could not be the guru of her son. तो सुनीति माता हैं इसलिए गुरु नहीं हो सकती। If you take that one sentence, you can become a dogmatist. तो केवल एक वाक्य पकड़ने से आप सिद्धांत पूरा नहीं समझ पाएंगे। But if you want to understand Srila Prabhupada's heart, परंतु यदि आप श्रील प्रभुपाद के हृदय को समझना चाहते हैं, then you'll avail yourself of the whole Vani that exists of Srila Prabhupada. तो जो श्रील प्रभुपाद की पूरी वाणी है जो हम सबके लिए उपलब्ध है उसकी आप शरण लेने का प्रयास करेंगे। And by doing that, you will imbibe his mood. और ऐसा करने से श्रील प्रभुपाद का मूड आप भी पकड़ पाएंगे। Because bhakti is not dependent on Shastra. क्योंकि भक्ति शास्त्र के ऊपर निर्भर नहीं है। Bhakti is independent. भक्ति तो स्वतंत्र है। And Shastra is a servant of bhakti. और जो शास्त्र हैं वो भक्ति के एक सेवक हैं। I'll leave you with this very good example. I'll leave you with this very good example. तो मैं आपको इसके साथ Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj was walking in Puri with his disciples. तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार पुरी में अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे। They passed some lepers. और वो जा रहे थे तो कुछ कोढ़ी Lepers, yeah. तो कुछ कोढ़ी लोग हैं उनके पास से गए। Which, by the way, is a nerve disease. That's what it is. लेपर No, leper, L-E-P-E-R. Begging. कुछ कोढ़ी लोग हैं उनके पास से गए। And no one gave any dakshin or anything, or any money, any bakshish, nothing, you know. और किसी ने उनको कुछ दिया नहीं। And after they passed the lepers, Srila Bhakti Siddhanta turned to his disciples, why you didn't give anything? तो जब उन कोढ़ियों के आगे से सब लोग निकल गए तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने अपने शिष्यों को बोला कि आपने उनको कुछ दिया क्यों नहीं? And they all quoted, the chapters in Gita about charity in the mode of goodness, passion and ignorance. तो भगवद गीता में तो बताया गया है कि जो दान है वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण में होता है। So Bhakti Siddhanta said, who is your father? तो शिष्यों ने ऐसे बोला तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने पूछा कि आपके पिता कौन हैं? Oh, Krishna is our father. तो उन्होंने बोला कृष्ण हमारे पिता हैं। Who is their father? और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने पूछा कि इनके पिता कौन हैं? Krishna is also their father. तो सब चुप हो गए और फिर धीरे धीरे बोले कि हाँ उनके भी पिता कृष्ण ही हैं। What does that make you? तो फिर अगला प्रश्न था कि इसका मतलब आपका उनका क्या संबंध हुआ? I assume nobody was strong enough to, they were all fearful of having the wrong answer. तो कोई अब आगे हिम्मत नहीं कर पाया कुछ बोलने की क्योंकि पता चल गया कि हमने गलत उत्तर दिया था पहले। Bhakti Siddhanta said, that makes you brothers and sisters. तो इसका भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला इसका मतलब आप लोग भाई बहन हैं। If you don't give to your brother or your sister, अगर अपने भाई या बहन को नहीं देंगे, your heart will become hard. तो आपका हृदय कठोर हो जाएगा। If your heart becomes hard, और आपका हृदय जब कठोर हो जाएगा, why would Krishna stay there? Why would Krishna stay there? और जब आपका हृदय कठोर हो जाएगा तो कृष्ण वहां पे क्यों रुकेंगे फिर? Prabhupada used to carry paisa with him. प्रभुपाद जी अपने साथ Paisa. पैसे लेकर चलते थे। And or he would give it to a servant to, some change. या अपने सेवक को कुछ प्रभुपाद जी पैसा दे देते थे। And he would distribute occasionally to, beggars. और जो भी भिखारी रास्ते में आते थे उनको सदैव देते थे कुछ ना कुछ। Charity in the mode of ignorance? तो क्या ये तमोगुणी दान है? Or are you protecting your bhakti lata bij? या अपनी भक्तिता बीज की रक्षा कर रहे हैं? At any
cost. कोई भी कीमत चुकानी पड़े भक्तिदा बीज की आप रक्षा कर रहे हैं. I emphasize at any cost. कुछ भी कीमत चुकानी पड़े जो भक्तिदा बीज है उसकी रक्षा करनी है. So please think about that. तो कृपया इसके बारे में थोड़ा मनन कीजिए. Think what will make my heart gentle and kind and loving. सदैव इसके बारे में सोचिए कि क्या ऐसा है, क्या क्या ऐसे कार्य करें जिससे हमारा हृदय विनम्र होगा, सॉफ्ट होगा, दूसरों के प्रति अच्छे भाव रखेगा. So that Krishna will enjoy being with me. ताकि कृष्ण को अच्छा लगेगा मेरे साथ रहते हुए. And it will be the rightful place for him. और कृष्ण की अच्छी जगह वहाँ पर बन जाएगी. So if there's any questions, I don't know what time it is, I've just been talking here. We have some time. If there's any questions, I'm happy to entertain them, or comments also. कोई प्रश्न है या समीक्षा है तो बोल सकते हैं, कर सकते हैं. माइक दे दीजिए पीछे. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji, for enlightening us. Prabhuji, my question is that I have read in Veda base that books are more important than lectures and conversations, something like that. And as you said that there are only 22% in the books. So how to understand that? We have to take reference for the books, then understand other things, or how to understand? What's the question? आप हिंदी में अनुवाद कर दीजिए. His question is that I have read that books are more important than lectures. So how to understand what you are saying? Oh, yeah, we've all heard that. We've all heard, there's a pecking order of what's important, right? तो ये तो सदैव होता है कि एक ऑर्डर होता है, एक श्रृंखला होती है कि पहले क्या फिर क्या, वो तो सदैव होता है, श्रेणी होती है. Yeah. That's also pulled out quite often before book distribution marathons. तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन से पहले भी कई बार ये चीज़ों को बोला जाता है कि हाँ ग्रंथ अधिक महत्वपूर्ण हैं. Explain to me this. Explain to yourself. Explain to yourself. तो अपने आप को ये बात समझाइए. When Prabhupada saw somebody who was good at art, प्रभुपाद ने जब किसी को देखा जो कि आर्ट में अच्छा था, he gave them that service. तो प्रभुपाद जी ने उसको वो वाली सेवा दे दी. When Prabhupada saw someone who was good at management, he gave them that service. प्रभुपाद जी ने किसी को देखा कि मैनेजमेंट में अच्छा है तो उसको वो वाली सेवा दे दी. When Prabhupada wanted everyone to participate in activities, he told us. और जब प्रभुपाद जी ने कुछ सेवाओं में सबको चाहते थे कि सब लोग जुड़े, तो प्रभुपाद जी ने बताया. Prabhupada wrote me. प्रभुपाद जी ने मुझे पत्र लिखा. Make films about Krishna. कृष्ण के बारे में फिल्म बनाइए. He funded Yadavar's first film back in 1971 from the book fund, BBT book fund. 1971 में यदुवर प्रभु की जो पहली मूवी बनी थी, तो प्रभुपाद जी ने बीबीटी फंड से धन निकाल कर उनको दिया मूवी बनाने के लिए. He didn't tell him, you can't do book distribution, you're not good at that, or you're not suitable for that, so you just make films. That'll be not quite as good, but you can do it. प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं बोला कि तुम ग्रंथों का वितरण नहीं कर सकते तो ठीक है, तुम बस मूवी बना लो, उतना अच्छा तो नहीं है पर चलो कुछ तो हो जाएगा. When you take prasadam as a book distributor this morning, you go to the prasadam hall. यदि आप ग्रंथों का वितरण करते हैं और सुबह प्रसाद देने जाते हैं प्रसादम हॉल में, what if all the cooks said, this is not a very important service, we should be going out distributing books? तो यदि सब लोग वहाँ पे सब भक्त कहें कि ये तो प्रसाद वितरण करने की सेवा उतनी अच्छी नहीं है, हम सब बाहर जाते हैं ग्रंथों का वितरण करने के लिए. What if the pujari said, we shouldn't be doing pujari service, we should be out in the streets with the books? अगर पुजारी सब बोले कि हम तो अंदर नहीं जाएंगे ऑल्टर में, हम बाहर जाएंगे ग्रंथ बांटने के लिए. It's just a marketing ploy. तो ये एक तरह से मार्केटिंग का तरीका है. You have to do what you're inspired to do. तो जो
आपके लिए प्रेरणादायक है, आपको वो करना है। You have to, you have work in your own nature. तो आपको अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना है। Everything I do, I think of doing as supporting the distribution of Srila Prabhupada's books. मैं जो भी करता हूँ व्यक्तिगत रूप से, मैं उसको इस रूप में देखता हूँ कि प्रभुपाद के ग्रंथों के वितरण का सहयोग हो रहा है इस सेवा के माध्यम से। But Prabhupada's books now are also, there are those who are pushing Prabhupada's instructions and his books online. परंतु जो प्रभुपाद के ग्रंथ हैं या प्रभुपाद की जो शिक्षाएं हैं वो ऑनलाइन भी दी जा रही हैं। And we're not very far away from when we get a chip and they put it here and we'll have all the books right up here. और जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो ऐसा बहुत दूर का समय नहीं है कि एक चिप आएगा हमारे दिमाग में घुस जाएगा और सारी ग्रंथ उसमें होंगे। It's coming right now. It's here and they're going to put this thing in there. अभी हमारे हाथ में है वो चिप और बहुत जल्दी हमारे दिमाग में डाल दिया जाएगा। So then where's the instruction? Well, actually everything in Prabhupada's books is more important. Is it more important than his lectures? तो फिर कहाँ ये बात रह जाएगी कि जो प्रभुपाद के ग्रंथों में है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रभुपाद के लेक्चर से? What do you think? क्या सोचना है आपके इस बारे में, क्या विचार है आपका इसके बारे में? Which is more important, lectures or books? तो क्या महत्वपूर्ण है, लेक्चर या किताबें? What's the answer? Lectures or books? What's his answer? Yeah, I said lectures महत्वपूर्ण है या ग्रंथ महत्वपूर्ण है? That means what? I asked what answer. What is the answer? क्या लगता है आपको कि प्रभुपाद के प्रवचन महत्वपूर्ण है या प्रभुपाद के ग्रंथ महत्वपूर्ण है? Asking me, Guruji. Actually, many devotees, I was reading one book that was based on mostly conversation of Prabhupada. So I was told some devotees, this is not important conversations, we have to go by books only. But I was not convinced by that statement, that books are more important. That's why I raised this question to you. Maybe you can clarify further. These are my law books for the next 10,000 years. How many times you heard that? तो आपने कितनी बार ऐसे सुना है कि प्रभुपाद जी ने बोला है ये ग्रंथ जो हैं ये लॉ बुक्स हैं अगले 10,000 साल के लिए? How are you going to even begin to understand how Prabhupada deals with Desha, Patra and Kala? प्रभुपाद जी ने कैसे देश पात्र और काल के अनुसार ये सब चीज़ें समझाई, इसको समझने की शुरुआत भी आप कैसे कर पाएंगे? Unless you read his conversations, hear his conversations or read them, hearing is reading, reading is hearing. Read his conversations or read his letters. How do you know how he dealt with things? जब तक आप प्रभुपाद जी की जो पत्रावली है उसको नहीं पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी की जो वार्तालाप हैं उनको नहीं पढ़ेंगे, तो समझ ही कैसे पाएंगे कि प्रभुपाद ने अलग अलग परिस्थितियों में कैसे अलग अलग भक्तों को प्रोत्साहित किया? That's why I say this is called the hermeneutic approach to understanding Srila Prabhupada. तो इसीलिए इसको वो अप्रोच बोला गया जो प्रभु जी ने बताया। There are those that think, oh, this hermeneutics, it's a Western thing, it's coming, it's going to, it's not the real way you understand Prabhupada. तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो पाश्चात्य जगत का है, ये वो तरीका नहीं है प्रभुपाद को समझने का। Well, I don't see what's wrong with studying everything that Prabhupada said and wrote and all of his Vani, the other 78% of his Vani, that's all less important? मुझे तो कुछ गलत नहीं लगता कि जो प्रभुपाद ने ग्रंथों के अलावा पत्र लिखे हैं या वार्तालाप किए हैं या प्रवचन दिए हैं 78% है, क्या वो बेकार है सब? It's all on the absolute level. ये सब परम सत्य की तरह ही है। And there's a chronological issue also. और उसमें एक श्रृंखला भी है। There are those that say, well, what he said in 1968 is not as important as what he said in 1978 because he was making changes to things and the way he dealt with things. हाँ, ऐसा भी कहा जाता है कि उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी ने 1968 में बोला और 1978 में बोला, तो 68 में बोला हुआ उतना प्रभावशाली नहीं था या उतना महत्वपूर्ण नहीं है
क्योंकि 78 में कुछ बदलाव भी हुआ परिस्थिति का, And that's very true. और ये बात सच भी है। So that has to be seen in the context of time. तो ये जो जैसे समय आगे बढ़ रहा है और परिस्थिति है, उसके संदर्भ में इस चीज़ों को देखना पड़ेगा। So a serious student has to put in the time reading. तो जो एक गंभीर भक्त है उसको समय लगाना पड़ेगा इन सबको पढ़ने में। You know, I just was looking at the bookstore. There's some amazing books I haven't even seen that are available. तो मैं बुक स्टोर में देख रहा था और मैं देखा कि इतनी अद्भुत कई पुस्तकें हैं जिनके बारे में जानता ही नहीं था। You know, some of the greatest reads you'll have are Chasing Rhinos with the Swami by Sham Sundar Prabhu. तो श्याम सुंदर प्रभु के उदाहरण के लिए एक पुस्तक है गैंडों का शिकार या गैंडों के पीछे भागना, प्रभुपाद के साथ ये पुस्तक है। He actually wrote the first volume while living with me. और जब पहला वॉल्यूम लिखा श्याम सुंदर प्रभु ने तो हम साथ में ही रह रहे थे। His research was impeccable. His memory was so intact. It was phenomenal how he put these books together. तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि श्याम सुंदर प्रभु ने उस पुस्तक को लिखने के लिए कितना अधिक रिसर्च किया और उनकी याददाश्त कितनी तीव्र थी, सब कुछ उनको स्मरण था और बहुत पूरी जान लगा दी उन्होंने पुस्तक लिखने में। Prabhupada is you can't completely understand him, but you can feel him. तो प्रभुपाद जी को पूरे तरीके से समझना असंभव है, परंतु प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा अनुभव कर सकते हैं। And then you take that with you wherever you go. You're really distributing, like Prabhupada's like the Jesus Christ of our time. तो प्रभुपाद जी जिस तरह हमारे आधुनिक समाज में जीसस क्राइस्ट की तरह हैं, उनको अनुभव करके अपने साथ लेके जा सकते हैं। His fame will be spread throughout all the three worlds. उनका यश तीनों लोकों में फैलेगा। And he nailed the Sunyavadi nonsense. और श्रील प्रभुपाद ने जो शून्यवाद है उसको कील से ठोक दिया। That is our true mission, to direct people to the absolute truth, who is Krishna. हमारा वास्तविक आंदोलन है लोगों को परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तरफ मोड़ना। And we're just helping them step by step along the way. और हम क्रमशः लोगों की सहायता कर रहे हैं उस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। Because not all of us are so fortunate that we get it right away. क्योंकि हम सभी इतने भाग्यशाली नहीं हैं कि एकदम चुटकी भर में हमें सब कुछ पता चल जाएगा। But when you get it, when you actually you understand, oh, I see that little boy with the flute tending the cows, he's supreme. परंतु जब हम इस बात को समझ लेंगे, वो जो छोटा सा बालक है जिसके हाथ में मुरली है और जो गौओं को चरा रहा है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। Then you can realize what Prabhupada meant, what the title means. I don't know if Prabhupada said it. Chant and be happy. तो फिर आप समझ पाएंगे जो प्रभुपाद जी का भाव था कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और प्रसन्न रहिए। Anybody know what that actually means? तो किसी को मतलब पता है इसका क्या अर्थ है? Because I don't see very many happy people doing their job. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama. क्योंकि जप के समय मैं तो कोई बहुत सुखी या प्रसन्न भक्त देखता नहीं हूँ। Do you know what is fly chanting? Fly chanting, you know? Flight chanting पता है आपको? Flight chanting? You don't know? Do you want me to demonstrate fly chanting? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare. That's what you're following the flies around while you're chanting. Fly, मक्खी chanting, जैसे मक्खियों के पीछे भागते हैं। So many types of chanting. तो अलग-अलग तरह के जप हैं। I don't see anybody really, like, hey, Hare Krishna, that's good time, Hare Krishna. I don't see too many like that. मैंने बहुत सारे भक्त ऐसे नहीं देखे, बहुत प्रसन्नचित भाव से हरे कृष्ण भगवान का जप कर रहे हैं। And if we see someone like, oh yeah, he's a new bhakta, he'll just be like us in a little while. और किसी को देख मिले तो बोलते हैं नया भक्त है, कुछ समय के बाद ये भी ठीक हो जाएगा। Yeah. So chant and be happy. Who knows what it really means? तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है? Chant and be happy. इसका वास्तविक अर्थ क्या है? कौन जानता है? Nobody's going to take this
challenge, huh? कोई इस चैलेंज को नहीं लेना चाह रहा, चुनौती को पकड़ना नहीं चाह रहा कोई. Come on, one of you can. There we go. Hare Krishna. That would mean that chant, struggle and be happy. Chant, struggle, and be happy. I don't know anybody who chants, struggles, and is happy. I'm struggling with my chanting, I'm struggling in life, I'm struggling, everything's a struggle. Anyone else? Yes, yes. What's your name? Paramatma? Okay, whatever. A rose by any other name would smell as sweet. So, because the holy name can do everything, and means after chanting or because we received the holy name from Guru Parampara, that's why we should be happy that we received the holy name. Close, very close. Very बहुत close. नजदीक आ गए आप कि हम बहुत प्रसन्न होना चाहिए कि मैं हरिनाम मिला है गुरु की. That's an element of chant and be happy. We had someone else? Did you want to give venture? Stump the Swami. Let's see if you can do it. First we should be chant properly, then we will be happy. Next we will be happy. But in same time we will not get. First we should have to do tapasya, then the result will come. Hindi or What did he say? I can't. he said first we should do tapasya, so we should chant properly. We should chant properly and then we'll be happy. So first we have to do tapasya and then we'll be happy. Close. So the Israeli army they have an anagram, KISS, K-I-S-S, means keep it simple, stupid. So keep it simple, stupid. Yeah. इसको सरल रखिए, मूर्ख व्यक्ति इसको सरल रखिए. So chant and be happy means chant and be happy. You're going home, back to Godhead. Srila Prabhupada ki jai. Hari Hari Bol. जब करिए खुश रहिए, भगवत धाम वापस जा रहे हैं. श्रील प्रभुपाद की जय. Hare Krishna Prabhu. Prabhuji, I have one question and comment. The Stribas. I smell trouble coming. Stribas is the mark of Lord's chest. It is just like a yellow hairs, bunch of yellow hairs. And Sri means Lakshmi and Dabatsa, the Bhrugu's lotus feet. The both Lord hold like yellowish hair. My question is that the Ghanasyam, there is some significance that why Lords hold Kansel, Chakra and lotus flower. There is mentioned in Nectar of Devotion. But why Lord's body's feature is Ghana, like cloud, so that he is called as Ghanasyam. And Prabhupada, sometimes he used that, some conversation is there, the Lord's bodily feature is just like blackish. But Prabhupada said, no, the Ghanasyam means just like cloud, Asitam Budam, like the cloud. So can you clarify why Lord's bodily feature is like cloud and the real meaning of Ghanasyam? All right, I'd like to invite anyone to join. I formed a new association in ISKCON. This is an association, it's very easy to join, no fee at all. There's no money. All you have to say is 3 words and you're in this new club. And this is called the I Don't Know Club. I could find out, but you have extended past my fund of knowledge. So I am proud to again say those 3 words which will validate my membership in the, I don't know, give me some time and I'll look it up. I'm sure the answer is there. But I never even kind of thought about that. So will you forgive me? And you can also join the I Don't Know Club by just saying these words.
You could say forwards. I don't know either. That's also good. So, with that humble obeisances to the great scholarship of all the devotees here, I thank you for allowing me to do what any person who doesn't want anyone to know. The saying is, you know a fool when they open their mouth, and you forced me to reveal that I'm simply a fool in front of all you. Thank you very much. Hare Krishna. Glories to Srila Prabhupada. Jai Granthra Srimad Bhagavatam ki, His Grace Narsingh Prabhu ji ki, Srila Prabhupada ki, Samvid Gaur Bhakta Vrind ki, Gaur Premanande. So we're extremely grateful, Prabhuji. It was wonderful hearing you and wonderful insights that you had from a purport that seeming to our eyes and vision and mind and intelligence was very simple, but you went deep inside and you brought some wonderful fruit and nectar out of that purport. So we're extremely grateful, Prabhuji, for having come and blessed us. तो प्रभु जी का बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं. जो ये तात्पर्य है देखने में बहुत सरल लग रहा है, इसकी पंक्तियां हम भी पढ़ सकते हैं, अपनी बुद्धि मन से कुछ समझ सकते हैं, पर प्रभु जी उसके बिल्कुल गहराई में लेकर गए हमें और बहुत ही सुंदर सिद्धांत हमें बताया और प्रभुपाद जी के और अनुगत कराया. एंड यू ऑल्सो मेड अस march closer towards surrendering more to Srila Prabhupada. So extremely grateful, Prabhuji, for your wonderful association. तो प्रभु जी का हार्दिक धन्यवाद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. और ये भी हम देख सकते हैं कि जो प्रभुपाद जी हैं तो एक तरीके से तो हमारे सामने वो अप्रकट हो गए हैं, परंतु प्रभुपाद जी हमारे सामने मूर्तिमान रूप में हैं अपने भक्तों के माध्यम से, जो खुद प्रभुपाद के बीच में रहे हैं, उनके साथ सोए हैं, खाए हैं, उनकी सेवा की है, उनके माध्यम से ही प्रभुपाद को समझ सकते हैं. आई वाज जस्ट सेइंग दैट फॉर अस प्रभुपाद वाज ऑलरेडी अनमैनिफेस्ट बिफोर वी केम, बट ही स्टिल मैनिफेस्ट in form of you senior Vaishnavas, because you have lived with Srila Prabhupada, you have heard Srila Prabhupada, you have served Srila Prabhupada, so we can understand Srila Prabhupada only through your grace. Thank you so much, Prabhuji, for coming and blessing us. Hare Krishna. Then why won't you do everything I ask you to do? Sorry? Then why won't you do everything I want? Yes. तो प्रभुजी कह रहे हैं कि आप फिर क्यों वो सब नहीं करेंगे जो मैं चाहता हूँ आपको करने के लिए बोलूँगा. I couldn't help but notice that on your altar, I know this is Delhi's very advanced, very modern city. तो दिल्ली मैंने देखा है कि दिल्ली एक आधुनिक शहर है और आपके ऑल्टर में भी देखा मैंने. So obviously there's a very big woke culture here. You know the woke culture, WOKE? It hasn't made it to India yet. Come on, woke culture. किसी को पता है woke, WOKE, woke culture क्या होता है? WOKE? Nobody. That's like, hey, whatever gender you pick, you can be that gender. Whatever suits you. You can do anything you want. You're a free spirit. वो culture का मतलब है कि जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं. And you have equal rights as a human being, no matter how you present yourself in the world. तो आप मनुष्य हैं तो आपके पास पूरा अधिकार है, आप जैसे भी चाहें अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं. So the LGBT plus movement is one of the leading edges of the woke culture. You know what the LBGT, whatever it is? Yeah, LGBTQ, RSTV, NLX, and OY. What happened to the P? So can you explain what that culture is to everybody? The whole woke culture thing? Same gender. Homosexuality? Yeah, gays, lesbians, transgenders, transvestites, jiras, what do you call them here? Yeah. So, do you know what the symbol of that movement is? तो ये जो I'm very happy to see that this temple is woke friendly. तो मुझे अच्छा लगा ये बात देखकर कि यहाँ पर हम लोग उस जेंडर को प्रमोट कर रहे हैं. Any person coming here will feel very welcomed.
तो उस मत का कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो उसको अच्छा लगेगा यहाँ पर आकर. Because the what do you call it, the emblem, the logo of the woke LGBTQ. तो जो वो जो कल्चर है उसका जो एम्बलम है is I hate to say it, is a rainbow. अच्छा वो रेनबो है. Today we have rainbow. So you've opened your heart to people from whatever they think, they can come here and learn Krishna consciousness. तो जिस भी भाव के हैं वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं क्योंकि They'll all feel very, oh, they welcome me. तो वो लोग भी आएंगे कहेंगे ओ ये हमारा स्वागत करते हैं, यहाँ भी रेनबो है. I'm sure you've all heard that story with Prabhupada was presented with that he was a guy who sometimes was in the girls' ashram because he thought he was a girl, and sometimes he was in men's ashram because he thought he was a guy. You don't know? तो एक ऐसी कथा है प्रभुपाद के समय की. एक भक्त था, वो कभी तो पुरुषों के आश्रम में होता था और कभी स्त्रियों के आश्रम में होता था, क्योंकि कई बार अपने आप को पुरुष समझता था और कई बार अपने आप को स्त्री समझता था. So the Matajis were upset and the guys were upset. तो माताएं भी परेशान थी उससे और प्रभु भी परेशान थे उससे. So finally they took the problem to Srila Prabhupada. तो आखिरकार श्रील प्रभुपाद के पास ये समस्या लेकर गए. Prabhupada, they presented everything, what was going on. तो जो भी हो रहा था सब श्रील प्रभुपाद को बताया. Prabhupada was sitting at his desk. तो प्रभुपाद बैठे थे वहाँ पर. He thought for a minute. और प्रभुपाद जी को जब सारी समस्या बताई तो एक मिनट के लिए सोचे प्रभुपाद. And he picked up his head. Tell him to pick one and stay with it. श्रील प्रभुपाद ने बोला इसको बोलो एक चुन ले कोई भी आश्रम और उसी में रहे. That's our Prabhupada. तो ये श्रील He प्रभुपाद. wanted that, you know, Lord Chaitanya's Patita Pavan, he's going to pick up the most fallen. तो ये श्रील प्रभुपाद का मूड था, चैतन्य महाप्रभु का मूड, कि जो सबसे पतित है उसको भी उठा लेंगे प्रभुपाद. That's how great he is. जय. Hare Krishna. थैंक यू सो मच. हिज ग्रेस नरसिम्हानंद प्रभु जी की, श्रील प्रभुपाद के, समवेत गौर भक्त वृंद की, जय गौर प्रेमानंदे. हरे कृष्णा. और एक सूचना है आपके लिए, आज का जो प्रसाद है वो अजय शर्मा प्रभु जी ने स्पॉन्सर किया है. अजय प्रभु जी आए हुए हैं और उनके सुपुत्र हैं, उनका नाम क्या है, अंकित. कहाँ है अंकित? अंकित जी का विवाह है अगले हफ्ते, तो उस उपलक्ष्य में उन्होंने भक्तों के लिए प्रसाद स्पॉन्सर किया है. तो एक बार हम लोग चैंट करेंगे इनके लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. और हम प्रोत्साहित करेंगे अंकित जी को कि गृहस्थ आश्रम के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें गृहस्थ भक्तों से और अच्छा सा गृहस्थ आश्रम निभाएं. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. समवेत गौर भक्त वृंद की जय. थैंक यू वेरी मच. सब लोग प्लीज गीता भवन में प्रसाद लेके जाइएगा. हरे कृष्ण.